26-year-old man from Hyderabad was reportedly shot dead by unknown assailants in Washington in United States. The deceased has been identified as Ravi Teja, a resident of R.K. Puram at Green Hills Colony in Chaitanyapuri. Ravi Teja died on spot after suffering grievous bullet injuries. Now, Ravi Teja, remember, had travelled to the US in March of 2022 to pursue his master's degree. And a pall of gloom has now descended on Ravi Teja's house in Chaitanyapuri as friends and relatives gather to console his grieving parents. An Indian student by the name of Ravi Teja is now known to have been shot dead in Washington. Hyderabad has reportedly been shot dead by unknown assailants in Washington in United States. The deceased, identified as Ravi Teja, hailed from R.K. Puram at Green Hills Colony in Chaitanyapuri from Hyderabad. Now, Ravi Teja seems to have died on spot after suffering grievous bullet injuries. A young student, Ravi Teja, travelled to the US in March of 2022 to pursue his master's degree. We don't know why he was shot and the reason for his death just as yet, but what we do know is that he was killed by unknown assailants in Washington. He hails from Hyderabad. He was a student in the United States. And visuals on your screens, family members of Ravi Teja, friends, family, relatives have gathered now to console his grieving parents. A young student by the name of Ravi Teja is known to have been shot dead in Washington while he was in the US to pursue his master's degree. We'll try and get more details on that unfortunate news of a 26-year-old student being shot dead in Washington. What we do know so far, in a tragic incident that unfolded in Washington, D.C., Ravi Teja, a 26-year-old student from Hyderabad, was reportedly shot dead by unidentified assailants. The young man suffered fatal bullet injuries, succumbed to them on spot. He's a native of R.K. Puram at Green Hills Colony in Chaitanyapuri in Hyderabad. He moved to United States in 2022. My colleague Noor Mohammed joining us with more details. Noor, और कितनी डिटेल्स हैं हमारे पास? हमें पता है कि यंग रवि तेजा 26-year-old स्टूडेंट जो कि यूएस में पढ़ने गए थे, उनको मार दिया गया है. क्या कुछ डिटेल्स निकल कर आ रही हैं? देखिए, उनके परिवार का लोगों को यही कहना है कि रवि तेजा की आखिरी ख्वाहिश थी और सबसे ज्यादा वो घर में भी प्रेशर कर रहे थे कि मैं बाहर जाकर पढ़ाई करूंगा. उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरे अमेरिका में शुरू कर ली थी, मगर पिछले कुछ दिनों से वो लगातार वहाँ पे जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे. कुछ बदमाशों ने पहले उनके कुछ डॉक्यूमेंट से हमला किया. गोली करने के बाद उनकी मौत हुई. कल रात भी उनके परिवार के लोगों को वहाँ पे जो अमेरिका में जो रवि तेजा के जो रिश्तेदार है उन्होंने बताया कि लोग वो केंद्र सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि रवि तेजा की डेड बॉडी हैदराबाद से लाने के लिए उनकी मदद की जाए. इसलिए रवि तेजा के परिवार के और उनके दोस्त कई लोग वहाँ पे 2022 से ही वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे. पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके जो दूसरे जो दोस्त थे उनकी किसी भी तरह से जॉब मिली, मगर रवि तेजा की जॉब नहीं मिल पाई थी. जिसकी वजह से रवि तेजा वहाँ के अनेक शहरों में वो अपनी जॉब की तलाश कर रहे थे. देखिए, हैदराबाद के लोगों का पहली घटना नहीं है. अगर आंध्र तेलंगाना की बात करूंगा तो कई छात्र ऐसे हैं कि वहाँ पर पढ़ाई पूरी होने के बाद जॉब की कोशिश कर रहे थे और जॉब के लिए जाने के बाद कई लोगों की मौत हुई है. लोग पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर सख्ती से नोट लेने की जरूरत है. इनके परिवार का कहना है. इसके परिवार के कुछ लोग अभी हैदराबाद के क्लस्टर से मुलाकात की है. उनकी डेड बॉडी लाने के लिए जितनी भी सरकार की तरफ से जो मदद मिल सकती है वो जो राहत पहुंचाए, ये उनके परिवार के लोगों का कहना है. All right, the family, of course, is being given all help possible right now. We know that he was a young student. He was a Telugu student.
with an American dream that was unfortunately cut short as he was shot dead. Noor, ये वो भी समय है जब हम अक्सर बात करते हैं कि किस तरीके से हेट क्राइम्स, गन क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं यूएस में। ऐसा लगता है कि कई सारे स्टूडेंट्स भी अक्सर इसको फेस करते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोबारा से एक तेलुगु बच्चा, एक स्टूडेंट जो कि यूएस पढ़ने गया था, उसको मार दिया गया है। कोई डिटेल्स एम्बेसी से इस वक्त निकल कर आ रही हैं? पेरेंट्स का क्या कहना है? क्या हुआ रवि तेजा के साथ? देखिए, दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल मुल्क माने जाने वाला अमेरिका के अंदर अगर वहाँ पे बार बार किसी एक मुल्क के छात्रों के साथ इस तरह की बदमाशी चलती है, वहाँ के बदमाश लगातार इंडियन के लोगों को बार बार टारगेट कर बनाती है, तो इससे बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ये तो सोचने वाली बात है। राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार को भी इस बारे में अमेरिकन गवर्नमेंट से बात करने की जरूरत है। देखिए, लगातार इससे पहले भी हैदराबाद के और खासकर तेलुगु स्टूडेंट इस तरह के हमलों में कई लोगों की मौत की जान भी जा चुकी है। देखिए, बार बार राज्य सरकार हैदराबाद के एम्बेसी से बात करते रही और केंद्र सरकार पर दबाव भी बनाते रही, पर कहीं ना कहीं वहाँ के बदमाश जो लगातार स्टूडेंट है उनके हमला करते जा रहे हैं। लोग उनके जो परिवार के जो लोग हैं उन्होंने दिल आपका हैदराबाद के कलेक्टर से मुलाकात की है। उन्होंने पूरा जो डेटा था उनके पास हैंड ओवर किया है, वो कब गए थे, उनकी मौत कैसे हुई थी, कैसे उनको इन्फॉर्मेशन आया था, उनके पास जो भी डिटेल्स के लोग उनके परिवार की तरफ से आए वो हैदराबाद कलेक्टर को हैंड ओवर किया गया है। फिर वो हैदराबाद कलेक्टर राज्य सरकार के थ्रू केंद्र सरकार से बात की। सबसे पहले मुद्दा ये है कि उनकी डेड बॉडी कैसे लाया जाए। उसके बाद क्या शायद हो सकता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के बाद इस तरह के हालात में कोई तब्दीली आए। देखिए, लगातार पिछले कई सालों से आंध्रा के स्टूडेंट को या तेलंगाना के स्टूडेंट को बार बार वहाँ के बदमाश पैसे लूटने या किसी भी नोटबंदी के बहाने से कहीं ना कहीं गोलियां मारकर इनकी जानें निकाल जा रही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। देखिए, अगर इस तरह की अगर दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाने वाले मुल्क के अंदर अगर इस इंडियन जैसे सबसे ज्यादा पूरे दुनिया भर हमारी कंट्री की आपकी इज्जत की नजरों से देखी जाए, अगर इस कंट्री के छात्रों की वहाँ पे सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं है तो ये बहुत बड़ी आने वाले दिनों में चिंता की बात होगी। इसलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार पर शायद दबाव बनाए कि आने वाले दिनों में इस तरह के हमले ना हो। All right, Noor, thank you very much for those details. Remember, Telugu-speaking population in the US has now jumped four-folds to about 12 lakh people. This is Telugu-speaking population alone in the United States. So there is a majority of Indians and specifically Telugu-speaking Indians who are currently in the United States. Now, this incident is of course alarming. It goes on to show that students are not safe. Especially international students abroad who are out there in the US to pursue their professional journeys. They face vulnerabilities, and the death of this young person, Ravi Teja, is going to shed some spotlight on the severities faced by international students.